Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 1st December 2020. Standard 10, subject Science. Chapter number 11, The Human Eye and the Colorful World. Okay. In previous lecture, we have studied what is the functions of human eye, then defects of vision and their corrections. Then we have studied the refractions of light through a prisms. We perform one activity, then dispersion of white light by a glass prism. Okay, this is the nice diagram of dispersion of white light by the glass prisms. Okay, there are vigor, seven colors like rainbow. Okay. Now in this video we have studied topic 11.5, atmospheric refractions. Okay student, what is atmospheric refractions? You might have observed the apparent random waving or a flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air फर्दर अप. ओके, एयर जो होती है वो कैसी होती है, लाइटर होती है. ऊपर जो होती है वो स्लाइटली उसका वेट जो होता है वो एकदम कम होता है. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air. Because and has refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical condition of the refractive medium are not stationary, the appropriate positions of the object as seen through the hot air fluctuates. This waving is thus an effect of atmospheric refractions on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is similar phenomenon on a much larger scale. Let us see how we can explain it. Okay, so let's start topic twinkling of stars. The twinkling of star is due to the atmospheric refraction of a straight light. The straight light on entering the Earth's atmosphere undergoes refractions continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, since the atmosphere bends straight towards the normal. The apparent positions of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly higher than its actual positions when viewed near the position of the horizon. Further, this apparent positions of the star is not stationary but keeps on changing slightly, since the physical condition of the Earth's atmosphere are not stationary. As was the case in the previous paragraph, since the stars are very distant, बहुत दूर होते हैं, they approximate point sides, और point size के भी होते हैं और sources of light. At the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly. The apparent positions of the star fluctuate and the amount of straight light entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter. कभी कभी stars हमें एकदम brighter दिखते हैं and some other time further which is twinkling direct. और कभी कभी क्या होता है, उसकी twinkling effect हमें देखने को मिलती है. Why don't the planets twinkle? Planets क्यों twinkling नहीं होते? The planets are much closer to the earth. Planet तो हमारी अर्थ से बहुत ही नज़दीक है. स्टार तो बहुत दूर है, बट प्लेनेट तो है वो एकदम ही नज़दीक है. एंड आर thus seen as extended sources
If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individuals nullifying the twinkling effect point size sources will average out of 0, thereby nullifying the twinkling effect. nullifying means कि इसके लिए वो twinkling नहीं होते हैं. Okay student, here the diagram. Appropriate star position due to the atmospheric refraction. हमें ऐसा लगता है कि रियल जो रे ऑफ पाथ यहाँ पे है बट एप्रीपिएट पोजीशन उसकी यहाँ पे होगी. ओके, देयर आर स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन रियल पोजीशंस एंड एप्रीपिएट पोजीशंस. Okay, this is the diagram of advanced sunrise and delayed sunset. Advanced sunrise and delayed sunset. जल्दी सूर्योदय होता है और देर से क्या होता है, सूर्यास्त मीन्स के सनसेट होता है. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. Okay, सन जो है हमें 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट ज़्यादा हमें जल्दी दिखता है. एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमोस्फियरिक रिफ्रैक्शन. ये एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन. हॉरिजॉन लाइन मीन्स के एकदम क्षितिज की जो रेखा होती है, लाइन होती है, उससे टच होके वो जाता है. वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल horizon by the sun. Figure 11.10 shows the actual and appropriate positions of the sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the appropriate sunset is about 2 minutes. The appropriate flattering of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. ओके, वो फिनोमिनन, वो बात तो एक ही होती है. 2 मिनट जल्दी उगता है और 2 मिनट जल्दी वो जो है वो सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है. तो ये जो है उसका डायग्राम है. ये दिस इज द डायग्राम. फिगर 11.10 atmospheric refraction effects of sunrise and sunset. Okay, so topic 11.6 scattering of light. This is the most important topic in this chapter. Scattering of light. The interplay of light with object around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. Okay, ये सब चीज़ों से हम फैमिलियर है कि स्काई जो है वो ब्लू कलर का हमें दिखता है. डीप जो सी जो डीप सी हो वाटर उसका कलर भी ब्लू दिखता है हमें. देन वंडरफुल फिनोमिना ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो हमें रेड कलर की जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलती है. In the previous class, you have learnt about the scattering of light by the colloidal particles. स्टैंडर्ड 9th में colloidal particles के बारे में हमने पढ़ा था, है ना. colloidal particles, colloidal solutions के बारे में पढ़ा था हमने. The path of a beam of a light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solutions, where the size of the particles is relatively larger. जो size of the particles होते हैं वो larger size के होते हैं. ओके, सो उससे ही ये इफ़ेक्ट होती है, टिंडल इफ़ेक्ट.
2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ऑलवेज बोर्ड की एग्जाम में होता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, डिस्क्राइब इट। द अर्थ एटमोसफियर इज अ हिट्रोजोनियस मिक्सचर्स। चैप्टर नंबर 3 या 4 था 9th स्टैंडर्ड में, मिक्सचर्स है ना, उसके हिट्रोजोनियस मिक्सचर उसमें था। द अर्थ एटमोसफियर इज अ हिट्रोजोनियस मिक्सचर्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। हिट्रोजोनियस मिक्सचर मीन्स के बहुत सारे जो गैसेस, बहुत सारे पार्टिकल्स है वो एक साइड मिक्सअप किए हुए होते हैं। These particles include smoke। ये जो पार्टिकल होते हैं उस पर स्मॉक भी होती है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect, which you have studied in class 9th. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room थ्रू अ स्मॉल होल। हम स्मॉल होल में से देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना। एक सपोज रूम हो, उसमें छोटा सा होल हो और धूप हो, है ना, धूप हो तो कैसी हमें ऐसी लाइन दिखने के लिए मिलती है। ओके, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज ये डोर है, ओके, डोर, दिस इज़ अ डोर, और सपोज यहाँ पे एक होल है, ओके। तो वहाँ से ऐसे हमें जो है ना छोटा शेडो दिखेगा, ऐसे धूप जो जा रही है, और वहाँ आप देखोगे तो छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में हमें दिखाई देते हैं, लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट। नॉर्मली टिंडल इफेक्ट यही हुई। फिर से मैं बताती हूँ कि the phenomenon of scattering of light by the colloidal particles gives rise to Tyndall effect, which you have studied in class 9. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. The scattering of light makes the particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets in the mist scatter light. The color of the scattered light depend on the size of scattering particle। जो कलर होता है, कलर्स ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength। देखो यहाँ वेवलेंथ की बात है, ओके। वेवलेंथ के बारे में भी हमने पढ़ा था। वेवलेंथ का सिंबल ऐसे हमने लेमड़ा बनाया था, दिस इज कॉल्ड अ लेमड़ा, है ना। वेवलेंथ जिसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में होती है वेवलेंथ। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। वो हमें जो है वो वाइट कलर की देखने को मिलती है। तो दिस इज द टॉपिक 11.6.2। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। जो स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है, ओके। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. These are more effective in scattering light of shorter wavelengths
at the blue and then light of longer wavelength at the red end. The red light has a wavelength about 1.8 times greater than the blue light. ओके, रेड जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट, ब्लू लाइट से ज़्यादा होती है. हम ऐसे लिखे तो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ ग्रेटर देन ब्लू लाइट. ओके, कितनी ज़्यादा है? 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट्स. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color, shorter wavelengths, more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. Then the sky would have looked dark. The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes, as scattering is not prominent at such high. Scattering जो है वो prominent height पे जाता है. You might have observed that danger signal lights are red in color. Signal light जो होती है वो red color, danger हमें दिखाई देता है. Do you know why? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेड लाइट जो है वो हम दूर से उसको देख पाते हैं, है ना. डेंजर का बोर्ड देखते हो आप तो कैसे होता है? रेड कलर का होता है. सबने देखा होगा डेंजर का बोर्ड, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे डेंजर का बोर्ड ऐसे होता है रेड कलर में, पूरा जो है वो रेड कलर का दिखता है. इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है टच नहीं करना चाहिए. जब हैवी लोड की इलेक्ट्रिसिटी लाइन जब जाती है ना, तो वहाँ रेड ऐसे डेंजर का स्केलेटन होता है. देखा है ना सबने? यू माइट द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज इफ द अर्थ हैड नो एटमोसफियर. देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग. देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क. The sky appears dark to passengers flying at a very high altitudes, as scattering is not prominent at such heights. You might have observed that danger signal lights are red in color. Okay, वो हमने डिस्कस कर लिया. Then 11.6.3 color of the sun at sunrise and sunset. कलर कैसा होता है? सनराइज में कैसा होता है और सनसेट में कैसा होता है? Have you seen the sky and the sun at sunset or sunshine? Have you wondered as you why the sun and the surrounding sky appear red? Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise and sunset. So activity 11.3. Place a strong source S of white light at the focus of a converging lens L. एल के नज़दीक हमें सोर्स क्या है? एस, और लेंस जो है वो यहाँ पे एल है. दिस लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. एलो द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक टी containing clear water. Allow the beam of light to pass through a circular hole C made in a cardboard. Obtain a sharp image of the circular hole on a screen using a second converging lens L2 as shown in figure. Dissolve about 200 ग्राम of sodium thisulfate. सोडियम थाइसल्फेट का हाइपर सॉल्यूशन उसके अंदर हमें डालना है. In about 2 liter of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 milli of concentrated sulfuric acid to the water. सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है. तो क्या देखने को मिलता है? You will find the microscopic sulfur particles participating in about 2 to 3 minutes. As the sulfur particles being to form, you can observe the blue light from the 3 sides. हमें 3 साइड पे ब्लू लाइट्स देखने को मिलती है. ओके, of the glass tank. This is due to the scattering of short wavelengths by minute colloidal sulfur particles. ये जो क्या है? colloidal effect हो गई सल्फर पार्टिकल्स की. Observe the color of the transmitted light from the 4 sides of the glass
tank facing the circular hole. It is interesting to observe at first the orange red color and then bright crimson red color on the screen. पहले हमें ऑरेंज कलर दिखता है, फिर हमें रेड कलर देखने को मिलता है. The activity demonstrated the scattering of light that helps you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or the sunset. Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of air and larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance. At noon, the sun appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength. इसके लिए वो longer wavelength रेड कलर में हमें दिखता है. This gives rise to the reddish appearance of the sun. ओके, हम सन के सामने देखने हमारी आंखें बंद कर दे तो हमें क्या दिखता है? पूरा रेड रेड कलर कैसे दिखता है ना. दिस इज़ द इफेक्ट. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द रीडिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट. ओके, रेक्टेंगल जो जैसे हम 90 एंगल्स बनाए, यहाँ पे ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश एंड लेस स्कैटर्ड होता है, फिर हमें सन नियर बाय ऑब्जर्व, वो भी हमें रेड कलर का दिखता है. ओके, दिस इज़ द डायग्राम. तो चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट. आपको इसकी एक्सरसाइज है वो आपकी फेयर बुक में लिखनी है. थैंक यू.